A very warm good morning to sweet little kids of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. I always pray to God for your well-being and happiness. I welcome you all in today's virtual class of EVS. Here is a beautiful quote for you. Always believe in yourself. हमेशा खुद पर विश्वास रखो. बेटा कोई भी काम मुश्किल नहीं होता. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. अगर हम खुद पर विश्वास रखें और कड़ी मेहनत करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है. ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 14. नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. Today we will do page number 86 and 87. Let's review the important points of the chapter that we discussed in our previous two videos. All animals need food to live. सभी animals को जीने के लिए खाने की जरूरत है. Even we human beings can't survive without food. Herbivores eat plants, carnivores eat flesh, and omnivores eat both plants and flesh. बेटा एनिमल्स 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स फ्लेश खाते हैं और ओमनिवोर्स प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश दोनों चीजें खाते हैं. All animals depend on plants for food. Hence, a food chain always begins with plants. एक फूड चेन हमेशा प्लांट्स से स्टार्ट होती है. प्लांट्स को कौन खाते हैं बेटा? हर्बीवोर्स खाते हैं. और हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स. तो बेटा फूड चेन हमेशा प्लांट्स से स्टार्ट होती है और कार्निवोर्स पर खत्म होती है. नाउ वॉच द एनिमेशन ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज. Where do animals live? Animals live in different places. Some animals live on land, some in water, some in trees, and some live under the ground. Movement of animals. Some animals walk, some swim, some crawl, and some fly. They do this with the help of their feet or wings. Food of animals. Different animals eat different kinds of food. Depending on the kind of food animals eat, they are divided into 3 different groups: herbivores, carnivores, and omnivores. Herbivores. Animals that eat only plants are called herbivores or herbivorous animals. Cow, buffalo, sheep, goat, horse, zebra, giraffe, deer, and rabbit are some of the herbivores. Carnivores. Animals that eat only the flesh of other animals are called carnivores or carnivorous animals. Tiger, lion, cat, snake, frog, eagle, owl, crocodile, and lizard are some of the carnivores. Omnivores. Animals that eat both plants and the flesh of other animals are called omnivores or omnivorous animals. Monkey, bear, chimpanzee, ant, sparrow, and crow are some of the omnivores. Eating habits of different animals. Different animals eat different types of food, so they have different feeding habits. Eating habits of herbivores. Herbivores like cow, buffalo, camel, etc. bite their food with their sharp front teeth and swallow half-chewed food. When they have eaten, they bring the half-chewed food back into their mouth. They chew and grind it with their strong and flat teeth and swallow it again. This is called chewing the cud. These animals are called ruminants or cud-chewing animals. Some herbivores like squirrel, rat, and rabbit bite nuts, seeds, and fruits into small pieces with their sharp front teeth. This is called gnawing. Eating habits of carnivores. Carnivores have long, pointed, and slightly curved teeth called canines that help them tear the flesh. Their strong, flat teeth help them in grinding and chewing the flesh. Eating habits of omnivores. The teeth of omnivores like
monkey, and bear are shaped to eat both types of food. Therefore, they can eat plant as well as animal food. Birds like sparrow and crow have beak that helps them to eat fruits, grain, insects, etc. The mouth parts of an ant can bite flesh as well as grains. We, the humans, also belong to the omnivore group. Some people eat only plant food and are called vegetarians, while those who eat plant food as well as meat are called non-vegetarians. Food for domestic animals. The animals which we keep at our homes or farms are called domestic animals. Cows, buffaloes, dogs, cats, horses, etc. are some domestic animals. Animals like cows, buffaloes, horses, etc. are herbivores. They eat grass, oat, oil cakes, and fodder. Animals like dogs and cats are mainly carnivores, but because they live with us, they can eat every type of food. Domestic animals need care. Domestic animals are very useful to us. For example, dog guards our home, shop, etc. Oxen help the farmer in plowing the field. Cows and buffaloes give us milk. Horses, donkeys, elephants, etc. carry our loads. We also ride them. Hens give us eggs. Some people also have rabbit, cat, parrot, etc. as a pet. So it becomes our duty to give them fresh and clean food and water, keep them at clean places, and take them to vet whenever they fall sick. We should be very kind to them. Special eating habits in animals. Some animals have special eating habits, such as sucking the food. Insects like mosquito and butterflies have long, hollow tube-like mouthparts. With such mouthparts, butterflies suck the nectar from flowers and mosquitoes pierce the skin of other animals and suck their blood. Swallowing the food whole. The teeth of some animals, like snake and crocodile, are not able to chew the food. These animals swallow their food whole. Animals with special body parts to help eat food. Some animals have special body parts which they use to get their food. An elephant has a long, thick and strong nose called the trunk. It uses its trunk to eat its food and drink water. It also uses its trunk to take a shower. Animals like chameleon and frog have a long and sticky tongue, which is joined at the front of their mouth. They shoot out their tongues to catch insects. Food chain. All living things need food to live and grow. Plants do not take food from outside. They make their own food. Animals take food from plants. Herbivores eat plants. Some herbivores are eaten by carnivores. This forms a chain called the food chain. A simple food chain starts with green plants which are eaten by a herbivore such as deer, and the deer is finally eaten by a carnivore such as tiger. The animal which is eaten by a carnivore is called its prey. The deer is a prey of the tiger in the given food chain. All food chains begin with plants and end with carnivorous animals. Did you enjoy the animation? मज़ा आया एनिमेशन देखकर? वेरी गुड. तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं. क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर. बेटा आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है. फर्स्ट वन, अ डियर इज एन कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर. डियर क्या है बेटा? कार्निवोर है, ओमनिवोर है या हर्बीवोर है? विच इज द करेक्ट आंसर? यस, herbivore. Option C is correct. So we will put a tick here. Second, a crow is an. Crow क्या है? Omnivore, herbivore या carnivore? क्या है बेटा crow? Very good. Omnivore. Option A is correct. So we will put a tick here. Third one, butterflies suck dash from flowers. Butterflies फ्लावर्स से क्या सक करती हैं? हनी, नेक्टर, पॉइजन. विच इज द करेक्ट आंसर? यस, नेक्टर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो वी विल पुट अ टिक हियर. फोर्थ,
A food chain begins with animals, plants, birds. फूड चेन्स किससे स्टार्ट होती है? एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ या बर्ड्स के साथ? Yes, plants. Option B is correct. So we will put a tick here. Question B, write true or false. There are 4 statements. You have to write whether these statements are true or false. First one, all living things need food for growth and energy. सभी लिविंग थिंग्स को ग्रोथ और एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है. इज इट ट्रू? Yes, it is true. So we will write true here. Second, plant-eating animals are called carnivores. Plant-eating animals को carnivores कहते हैं. Is it true? No, it is false. So we will write false here. Third, snakes swallow their food whole. Snakes अपना पूरा का पूरा खाना निगल जाते हैं. Is it true? Yes, it is true. So we will write true here. Fourth, a frog has a short sticky tongue. Frog की एक छोटी sticky tongue होती है. Is it true? No, it is false. So we will write false here. Question C. Circle the animal which does not belong to the group. बेटा आपको उस एनिमल को सर्कल करना है जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता. फर्स्ट है हर्बीवोरस. अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है. काओ, डियर, हॉर्स, लॉयन. इनमें से कौन सा एनिमल हर्बीवोरस नहीं है? यस, लॉयन. तो हम लॉयन को क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे. लॉयन क्या है? कार्निवोरस एनिमल. वेरी गुड. अब सेकंड देखिए, कार्निवोरस. ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, डॉग, शीप, लॉयन, टाइगर. अब इसमें से कौन सा एनिमल कार्निवोरस नहीं है? यस, शीप. तो हम शीप को क्या कर देंगे? सर्कल. शीप क्या है? वेरी गुड, हर्बीवोरस एनिमल. अब थर्ड देखिए, ओमनीवोरस. इसकी 4 ऑप्शंस गिवन है. क्रो, बेयर, मैन, काउ. अब इसमें से कौन सा एनिमल ओमनीवोरस नहीं है? यस, काउ. तो हम काउ को क्या कर देंगे? सर्कल. काउ कौन सा एनिमल है बेटा? वेरी गुड, हर्बीवोरस. क्वेश्चन डी, आंसर दीज क्वेश्चंस. There are 3 questions. You have to write down answers of these questions in your EVS notebook in neat and clean handwriting. First one, what type of teeth do carnivorous animals have? Carnivorous animals के teeth कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बेटा? Yes, long, pointed and slightly curved. जिनको क्या कहते हैं? Canine. Very good. Carnivorous animals have long, pointed and slightly curved teeth called canines that help them to tear the flesh. Second, what type of teeth do herbivorous animals have? Herbivorous animals के teeth कैसे होते हैं? Herbivorous animals have sharp front teeth and flat grinding teeth to cut and chew their food. थर्ड, व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन क्या है? बेटा फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होती है? प्लांट से. वेरी गुड. प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस एनिमल्स एंड हर्बीवोरस एनिमल्स आर ईटन बाय कार्निवोरस एनिमल्स. दिस फॉर्म्स अ चेन कॉल्ड अ फूड चेन. क्वेश्चन ई, थिंक एंड आंसर. बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोच के लिखना है. Why don't snakes need teeth? स्नेक्स को टीथ की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि वो अपना फूड पूरा का पूरा निगल जाते हैं. स्नेक्स डोंट नीड टीथ बिकॉज दे स्वेलो देयर फूड होल. एक्टिविटी टाइम. बेटा मुझे पता है आपको एक्टिविटी टाइम का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है और आज हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है करने के लिए. एक्टिविटी 1, डिस्कस हाउ मैन इज़ अपसेटिंग द फूड चेन्स. मैन फूड चेन्स को कैसे अपसेट कर रहा है, तो
इसके लिए मैं पहले आपको एक फूड चेन बनाकर दिखाऊंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ मैन इज अपसेटिंग द फूड चेन्स। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे एक फूड चेन बनाई हुई है। सी, दिस इज द ट्री। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स। जेब्रा क्या है? हर्बीवोर है, इट ईट्स ग्रास। अब ये हमारा लॉयन है। लॉयन ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, इट इज कार्निवोर्स। तो ये हम किसको खा रहा है? जेब्रा को। अब एक फूड चेन है। अब इस फूड चेन में से अगर हम एक चीज को हटा दें तो क्या होगा? सपोज मैं यहाँ से ट्री को हटा देती हूँ। ट्री मैंने हटा दिया तो जेब्रा को खाना कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो इट कांट लिव, इट कांट सर्वाइव। अब अगर ये सर्वाइव नहीं करेगा तो कार्निवोर्स को खाना कहाँ से मिलेगा? इट विल ऑल्सो डाई। तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। अगर मैं इसमें से सिर्फ जेब्रा को हटा देती हूँ तब भी देखिए, कार्निवोर्स को, हर्बीवोर्स को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का। अब वो ग्रास तो नहीं खाएगा, प्लांट तो नहीं खाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो हमारा लॉयन है इट विल डाई। सो इन दिस वे फूड चेन इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द मैन। मैन क्या कर रहा है बेटा? ही इज कटिंग ट्रीज। किस लिए कट कर रहे हैं ट्रीज को? हाउसेस बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। सिमिलरली he is hunting animals for getting their skin, hair and other useful things and disturbing the whole food chains. अगर हम चाहते हैं हमारी नेचर में बैलेंस बना रहे, हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे, तो हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करने हैं और एनिमल्स को भी बचाना है। Activity 2. Collect pictures of grains, birds, insects, lion, deer, man, frog, goat and plants. Make as many food chains as you can. बेटा, मैंने अभी आपको फूड चेन बनाकर दिखाई। अब आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और फूड चेन्स बनानी है। ओके? एक्टिविटी 3. Follow the steps to make a paper elephant. बेटा, आपको पेपर एलिफेंट बनाना है। इसके 7 स्टेप्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है। मैं अब आपको पेपर एलिफेंट बनाकर दिखाऊंगी और उसके बाद ये एक्टिविटी आप घर पर करेंगे। बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ पेपर एलिफेंट कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर पीस लेंगे, पेपर का स्क्वायर पीस है ना ये। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है बेटा। फोल्ड करने के बाद इसको हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये पीस देखिए, यहां से देखिए, इसमें हम इसको क्या करेंगे? ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस पार्ट को नजर आ गया, ट्रायंगल बन गया है। अब हम इसको ऐसे ठीक है खोल देंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे दोबारा से। फोल्ड करने के बाद ये आपको एलिफेंट की शेप नजर आ रही है। अब हम पेंसिल से यहां पर ड्रॉ कर लेंगे और इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। अब जब आप कट करोगे तो आपके पास कटिंग करके ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब कटिंग करने के बाद ऐसा आ गया। अब आपने क्या करना है? इसके ऊपर आईज लगानी है। आप आईज बना लोगे। आप पेपर की बना सकते हो आईज, जैसे मैंने ये बनाई है पेपर की आई, या आप बिंदी भी ले सकते हो ब्लैक कलर की मम्मा की, या फिर आप गुगली आई भी लगा सकते हो। और ये आपको टस्क नजर आ रहे हैं, एलिफेंट के टस्क होते हैं ना, तो ये 2 टस्क लगाने हैं हमने। पेपर हम लेंगे, एक स्क्वायर पेपर, कोई भी पेपर, वेस्ट पेपर होगा, उस पर हम लोग शेप बना देंगे और टस्क कट कर लेंगे ऐसे। ठीक है। कटिंग आपने मम्मी या पापा की हेल्प से करनी है, खुद कटिंग नहीं करनी है। और उसके बाद फेविकोल से हमने ये टस्क ऐसे यहां पे चिपका देने हैं और यहां पर आईज चिपका देनी है। और
इसकी जो ट्रंक है जिसे हम सूंड बोलते हैं, इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया ऐसे और एक फोल्ड हमने ऐसे किया, तो ये हमारा एलिफेंट तैयार हो गया है। ठीक है बेटा। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। बेटा इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वी रेड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट, domestic animals and pet animals. Now here is a question for you. You have a pet dog. While feeding it, you spilled the milk. Now what other food can be given to it? आपके पास एक पेट डॉग है, उसको खाना देते वक्त आपसे दूध गिर गया। अब आप उसको दूसरा कौन सा खाना दे सकते हो? बेटा डॉग कहाँ रहता है? हमारे घर में रहता है हमारे साथ, तो डॉग हर तरीके का खाना खा लेता है। तो अगर दूध गिर गया तो हम उसको और बहुत सारे फूड खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, चपाती, बॉइल्ड एग एंड मीट। ओके, इट्स टाइम फॉर होमवर्क. डू बुक वर्क ऑफ चैप्टर 14 इन द बुक. राइट क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Bye.